और एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त यूक्रेन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और देश में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। आपको बता दें थोड़ा कि आखिर ये मार्शल लॉ होता क्या है। ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत देश में या देश के किसी भी क्षेत्र में सेना को ये अधिकार मिलता है कि वो स्थान पर शासन और नियंत्रण करे, और ये अधिकार उन्हें सरकार द्वारा ही दिया जाता है और इस कानून को हम सैनिक कानून के नाम से भी जानते हैं। तो इस वक्त हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हुए फिलहाल यूक्रेन एक कदम और आगे बढ़ाकर उन्होंने अपने देश में मार्शल लॉ को लागू कर दिया है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा जो अधिकार है अब सेना के हाथ में चले गए हैं। और आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बैठक भी बुलाई है ताजा हालात का जायजा लेने के लिए। चलते हैं एक्सपर्ट के पास। जयंत दास गुप्ता, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू WTO, हमारे साथ जुड़ा है लाइव और ज्यादा चर्चा के लिए। Dr. Das Gupta, thank you so much for taking the time. Or first of all, the latest statement that has come from Vladimir Putin on this entire scenario, where he has said that he has no plans to occupy Ukraine. In fact, he has said that this is just a special military operations, and the final decision as to who's going to run Ukraine lies with the people of Ukraine. How do you read this particular statement? Are we in a position actually to trust what Putin is saying at this point in time? President Putin has mentioned that this is part of a special military operation in the Donbass, which means that the two republics which the Russians have recognized in the past few days, Donetsk and Luhansk, they have an agreement with these two republics. And according to point 7 of the charter, they can go to the rescue of these two republics if they are asked to intervene. So it is claimed by the Russians that they are moving their troops into these two republics only. That is the Donbass. Now, one must remember that this has been an area of conflict since 2014 at least. And these two regions are primarily Russian speaking. And it needs to be remembered also that out of Ukraine's population of approximately 4.5 crores, 67% is Ukrainian speaking and 29% is Russian speaking. So the Russian speaking population is mainly concentrated in the eastern part, but also in Crimea and in Odessa. Now, as part of this offensive, the Western press is reporting that there have been missile attacks on Kiev, the capital of Ukraine, on Kharkiv, which is in the northeastern part of Ukraine, and in Odessa port. Now, these attacks are probably cruise missile attacks, and these may be to make it could be a more robust reaction in terms of military intervention. But I think the military intervention part will not come about as a knee-jerk reaction. It will need to be, decided by the whole of NATO, including Germany, France, and the other major partners of NATO, and the UK, along with, of course, the US. So I don't think there would be a military response immediately, but it could follow. And if it comes in, then there would be a major escalation, major problem, which will affect the rest of the world. That's right. That's right. Dr. Das Gupta, request you to please stay with us. Some more breaking inputs coming in on this big story. And the breaking input is right now is that Russia has shut down the airspace near Ukrainian borders for commercial flights. And this is a big update coming in right now. Russia has shut airspace at and near Ukrainian borders for commercial flights. In fact, some more breaking inputs and developments taking place. Let's take a look at that. और आपको बता दें कि रूस के युद्ध का ऐलान करने पर वैश्विक तेल की कीमतों पर भी अब असर देखने को मिल रहा है। तेल कीमतों में उछाल आया है। तेल की कीमतें अब $100 प्रति
बैरल तक पहुंच गई हैं। सीधा चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। डॉक्टर जयंत दास गुप्ता जी हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। सो मिस्टर दास गुप्ता, वी वर जस्ट letting our viewers know some of the latest developments taking place, and first talking about the decision of Russia to shut the airspace of Ukrainian border for commercial flights. How do you see it impacting all the evacuation drills that are taking place in Ukraine right now and which are being conducted by several nations including India? I think because of the missile strikes which took place a few hours ago on Kiev, perhaps the airport in Kiev has been hit, or certain facilities in the airport have been hit, and the Ukrainian authorities, I am given to understand, have already stopped all commercial flights from operating from Kiev. So, in any case, evacuation will have to be put on hold for the moment now. But as far as the Russian, closure of the airspace is concerned, this could be because they could apprehend that there would be military aircraft from both sides and missile attacks possibly from either side, which could take place. So it could be a precautionary gesture on the part of the Russians to close the airspace on their side as well for commercial aircraft. Right. Dr. Das Gupta, also one important thing that we have to discuss is that the impact that we are seeing on the global oil prices, quite predictably, it continues to shoot up, and it can't be a good news for Indian economy specifically. Yes, because the Russians are the second largest exporters of oil. And if there are sanctions, obviously their oil exports to the rest of the world, perhaps not including China, will get affected. So a major source of supply for oil will get affected. And so there would be an upward pressure on the prices. It had already gone up to about $96. Now it is hovering around $100. It is expected that it could go up to about $110 to $120, which is about the maximum that it had reached a few years ago. So oil prices will go up. The other problem is that gas prices, on which the rest of the world also is now getting more and more dependent, will go up. It needs to be remembered that Russia supplies about 40% of the gas for Europe, whereas the Gulf supplies only 5% of the gas. So the gas supplies will be the first to get affected to Europe and to other countries where the Russians export. So that will also affect commercial activity, power production, heating in the colder countries of Europe, etc. So there would be all-round, I think, impact on the industry, on global oil prices rising up and then staying there for some time till the conflict gets resolved. जयंत दास गुप्ता जी, शुक्रिया समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। एक के बाद एक बड़े डेवलपमेंट्स इस बड़ी स्टोरी पर हो रहे हैं। लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट्स भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विशेष विमान आज सुबह भारत पहुंचा था और इस विमान से करीब 182 भारतीय वापस लौटे हैं, जिनमें छात्र भी शामिल हैं। सुनिए कुछ रिएक्शंस। तो वहाँ पे सिचुएशन अभी इतनी अफेक्ट नहीं हुई है जितना साइडवेज जैसे बॉर्डर साइड हुई है। बट ये है कि जैसे हम कल फ्लाइट में आ रहे थे तो हमें न्यूज़ सुनने में मिला कि वहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन वो कर दी गई है। तो अभी ये है कि मैक्सिमम जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं और रेस्क्यू फ़्लाइट्स भी, जैसे पहले फ़्लाइट्स क्या था कि बहुत कम हो रही थी, एयर इंडिया ने 3 ही फ़्लाइट्स अरेंज की थी। बट अभी ये है कि फ़्लाइट्स वगैरह का भी नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इंडियन स्टूडेंट जल्द से जल्द यहाँ पे आने का ट्राई कर रहे हैं। बुकिंग्स वगैरह ऐसा है कि बुकिंग्स नहीं मिल रही तो नहीं है, बुकिंग्स मिल रही हैं, बट लेकिन ये है कि इस टाइम पे थोड़ी सी कॉस्टली पड़ रही है। मैं यूक्रेन में 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ और अभी वहाँ पे सिचुएशन पहले से बिगड़ चुकी है। कुछ टाइम पहले इतना सिचुएशन नहीं था, बट धीरे धीरे बॉर्डर्स पे तो हो ही रही है और जो बॉर्डर से दूर है सिटीज़, वहाँ पे भी
लाइक डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती जा रही हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी वहाँ पे हैं वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको फ़्लाइट्स नहीं मिल रही हैं। और उसके अलावा जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उन्होंने यूएन सिक्योरिटी बढ़ा दी है और इमरजेंसी बढ़ा दी है। क्योंकि हमें एम्बेसी की तरफ से नोटिस आया था, तो इसलिए हम ट्राई करें कि जल्दी से वापस आ जाए। इस बड़ी खबर पर हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक।